हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा. Where does this end? What is the end state you want to see? नाक में दम, international migraine. Pakistan has everything that gives you an international migraine. Only answer is Pakistan. They do not have the money, but they have nuisance value. The simple damn fact is that he is going around with a begging bowl. The Chinese are very happy fighting you till the last Pakistani. We will do our damnedest. बचा सकते हो तो बचा लो. कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो? Used, इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का. A strong Pakistan is in India's interest. My foot. ऑपरेशन सिंदूर was abruptly shut down. क्या मैं खुश था? नहीं. मैंने टेलीविजन पे कहा था नहीं दिल भरा है? हमारा भी दिल मांगे मोर. Spokesperson was saying we are standing with Pakistan, no matter what. Are you prepared to lose Beijing and Shanghai? For the sake of what? Pakistan? Okay, what do you think about Field Marshal Asim Munir? Operation Sindoor was partly due to his ambition. Operation Sindoor is live, it seems. It's very live. General Bakshi, welcome to the show. And God bless you. thank you for your time and for lending your booming voice Oh, thank you. to the indeed. platform Most welcome. which I'm hoping will boom ever louder. God bless you. God bless you. General Bakshi, let me start with a question जो कि थोड़ा सा शायद कंटेंशियस हो सकता है. हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने उससे पहले इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं. Where does this end? What is the end state you want to see? The end state we want to see is पाकिस्तान के 4 टुकड़े. In fact 5. Why be parsimonious? 5 टुकड़े. बलूचिस्तान, सिंध, पश्तूनख्वा, पंजाब, साइरिकिया. These are the natural fault lines in Pakistan. Right. और मेरे हिसाब से जब तक आप पाकिस्तान के 5 टुकड़े ना करें, आप चैन से जी नहीं सकते. ये ना खुद वो बोलते हैं हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे. खुद तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, फटीचर मुल्क है, सवा सत्यानाश हो गया इकोनॉमी का. है वो कहते हैं रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई. लगे हुए हैं साहब कि किसी तरह भारत का नुकसान पहुंचाना है. अगर वेस्टर्न साइड से मुश्किल हो रहा है तो बांग्लादेश की साइड से ये शुरू करा रहे. जब तक ये रहेंगे ये न्यूसेंस हमारे लिए बन के रहेंगे. नाक में दम, सर में दर्द, इंटरनेशनल माइग्रेन. ओनली आंसर इज पाकिस्तान स्प्लिट इनटू 4. एंड स्टेट. What will it cost to do this? Not much. What it will take is political will. What it will take is the readiness to spend on your military. You know, we've got a whole lot of economists, cost cutting. Auditor generals, I'm afraid, cannot be military generals. True. And if they start behaving like military generals, you know, that cut the costs. All right, at what cost? क्या cost to the nation state? आप बोले साहब मैन पावर काट दो. To give you a small example, when Operation COVID was on, that was the time China chose to give us the finger in Ladakh and Arunachal Pradesh. Right? But are you aware of the fact that taking advantage of COVID, the government of India and our auditors managed to cut the Indian army down by 1,80,000. How? Each year 60,000 people retire every year, and a similar number are recruited. They just simply stopped recruitment for 3 years. कि COVID हो जाएगा. I mean, there was no COVID as far as the CRPF, CISF, BSF, ITBP was concerned. They kept merrily recruiting, but the recruitment to the armed forces was stopped. कि taking advantage of this, these people are not reducing their size. So we will simply cut off 1,80,000 troops. You cut off 1,80,000 troops. Where do you think they were cut from? Rajouri, Punch, Riyasi, Kathua, Samba, you know, Doda, Kishtwar, and what happened? Those were the areas we had pacified. I personally had fought in Kishtwar for 3 years and for 2 years in Rajouri, Punch, and we had pacified that area. For 1 decade it kept quiet.
Then you opened the window again. You created vacuums in which he flowed back in, right back in. Right. And you had removed the CI grid. Now, somebody has to, keep in mind the military picture. The size of an armed forces is not determined by the auditor. It is determined by the threat. Yes. If the threat is increasing from a 2.5 front threat, India has gone to 3.5 front threat, right? We had China to the north, Pakistan to the west, and Bangladesh to the east. Ji. And now we have, of course, we always had the Gaddar front. The terrorists, the Maoists, It's inside. the Tanzeems in J&K, etc., fighting inside. So when your threat is increasing, you can't cut down your manpower. And you specifically cannot cut down your manpower because the United States is cutting manpower. The United States has two bloody oceans on either side, Pacific and the Atlantic. And it has Canada and Mexico for neighbors. Canada, which is trying to just gobble up. You have China and Pakistan, man, two nuclear armed powers. And for you to cut down manpower is a sign of insanity. Insanity. 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना school सिखाता है, ना college सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के greatest mind, जिन लोगों के साथ मैं podcast करता हूँ, interact करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे, उनकी knowledge, उनकी life से जो हम extract कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy and I will take care of the rest. You have 1.4 billion population, the biggest in the world. 50% of them are below 28 years. You have to create jobs. I mean, only somebody bereft of his common sense would start cutting jobs in this kind of a situation. Right. You are saying we are cutting stupid manpower, we don't want to give jobs to village idiots. Well, you are doing it at a cost. One, to national security, and two, to the simple fact that you increase the army of unemployed and see what happens to your national internal security. Right? And the simple fact is, your prime requirement now is to give jobs to a youthful population. And such a time you start cutting jobs, then you have to examine your sanity. General Bakshi, how is it that despite the economic collapse, जो कि on the face of it दिख रहा है पाकिस्तान में, they have continued to be a pest and an international migrant, as you put it. How does that make sense? How does that come into picture? How does that bring into perspective the fact that they do not have the money, but they have nuisance value, ever increasing nuisance value? How is that happening? Excellent question. The simple damn fact is that he is going around with a begging bowl, right? He has been one of the biggest borrowers from the IMF. The 27th loan the IMF has given starting from 1958, right? And they have just given them $7 billion on the platter, right? To make up for the costs of Operation Sindoor. Right. And like Mark Rubin said, it is like giving a jerry can of petrol to an arsonist. I mean, this is how this stupid country, ये जो मुल्क है, it has become an international migraine. It is any terror incident anywhere in the world, and you can trace the threads back to Pakistan. It is on the brink of economic collapse, but it is like Nazi Germany. It is an over-militarized state. In other states, the states have an army. Correct. In Pakistan, the army owns the state. And therefore, it demands the best of toys. It wants Swedish AWACS. And now that the cost crunch has come and they can't pay in dollar terms, so they are now trying to buy Chinese weaponry. 80% of their weaponry is subsidized Chinese weapons and equipment.
quite a few of them have proven to be a bit of a PR disaster in Op Sindoor. Right. But the fact is, he's getting weapons. He's getting them. 80 billion loans he has taken from China, right? To pay off loans, he's taking more loans. Yes. वो एक संस्कृत प्रवर्ब है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. उधार लेंगे लेकिन घी पिएंगे साहब, खाएंगे नहीं, पिएंगे. ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. That is the state of Pakistan. But it seems to have worked because this is not the first loan. It will not be the last. चल तो रहा ही है. चल तो Who's to say it will not continue in the future? रशिया यूक्रेन युद्ध कितने साल से चल रहा है साहब? 3.5 साल. चल रहा है. No end in sight. Donald Trump can say all he likes. He's now given a 50 days deadline. We'll see how that works. But the simple fact is there is no end in sight. Why is there no end in sight? The Ukrainian army has been destroyed 3 times over. 3 times over, Russia have destroyed every tank, every aircraft, every missile that they owned. They have just been given more by the Americans and now by the Europeans, who are just supplying them with weapons and keeping the fight going. They are prepared to fight Russia till the last Ukrainian. The Chinese are very happy fighting you till the last Pakistani. So it's really China that we are fighting Not only China, the United States by proxy. by proxy. Who is giving most of the IMF loans? It is courtesy the United States of America. Who is giving F-16s? The United States of So America. that puts us in a very strange situation, doesn't it? It is a paradoxical situation. Yes. Yes. What do we do? What is the way out? I mean, we can't do without the United States. We can't do with them. If they keep playing both sides, they obviously have the upper hand. So, what is there any way out at all? You see, as I think it was Henry Kissinger who put it very well, you know, it is dangerous to be an enemy of the United States, but it is disastrous to be a friend. Yes. Yes. So, with friends like these, we don't need enemies, you know. And for all that, you know, it makes sense to make an outreach to the United States, especially after the Cold War, when the United States decreed that the main threat is China. China. That is the main threat for India. Yes. Right? So, therefore, the United States, the main threat is China. If it has to fight China, it needs Japan, it needs India. Right? It needs Vietnam. These are the allies that it needs in Asia. Right? And this is what had led to the thaw, the détente between India and the United States. Right? And then we had purchased about almost $10 to $20 billion worth of weapons from the United States. We had taken the C-17 Galaxy transports. We had taken the the Poseidon maritime reconnaissance aircraft, Apache, Chinook helicopters, etc., etc. The whole laundry list of things we had taken from them. But then we again got stabbed in the back. When Joe Biden came, you see, it was okay as long as their main threat was toward China. And they had done, 3 American presidents had done a pivot towards Asia. Clinton, Obama and the others, they had all done a pivot towards Asia. When Joe Biden came, he did a pivot back to Europe. He said, get the hell out of Afghanistan, and the American army complied. And they came out in a manner that was disastrous. You know, because Joe Biden has said, they don't F around with me. You know, they didn't. But they came out, you know, they said, come out, they just left everything and came out. And about how many $1 billion worth of weapons they left behind. And it was chaotic, and it was quite a humiliation for the United States, self-inflicted, you see. But the fact of the matter is, he wanted to fight Russia through Ukraine. So they have been arming. You said, how is Pakistan continuing this? Exactly the Ukraine model. Ukraine is being armed, and you want to be a sucker. You want to lend yourself to foreign intrigues. You know, you want to rent out your territory to foreign powers. सर उसी लॉजिक से क्या उनको इंडिया को आर्म नहीं करना चाहिए चाइना के अगेंस्ट? करना चाहिए था, कर रहे थे. That is why the Quad was formed.
बट वही मैं बता रहा हूं कि जो बाइडेन साहब आए और उन्होंने स्विच अराउंड कर दिया. इज नो लॉन्गर चाइना इज माई मेन एनिमी, रशिया इज माई एनिमी एंड आई विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, आई विल सप्लाई वेपन्स. हमने कहा साहब हमारी आपकी लड़ाई होगी, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है. हमारे लिए रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर. ठीक है, उन्होंने 71 के युद्ध में हमारा बहुत मदद करी और फिर हमको उनसे सस्ता तेल मिल रहा है. हम अपनी इकोनॉमी को टारपीडो क्यों करें कि आपके साथ सहानुभूति दिखाने. यू हैव अ प्रॉब्लम विद रशिया, यू सॉर्ट इट आउट विद रशिया, वी विल कंटिन्यू टू बाई ऑयल. तो कुछ देर तो चलता रहा. फिर जो बाइडेन साहब आ गए, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस. एंड देन जो बाइडेन टर्न्ड हॉस्टाइल. अरे साहब उसने पाकिस्तान की ISI को साथ लेकर कू कराया बांग्लादेश में, हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया. वहाँ पे उसको ईस्ट पाकिस्तान बनाने के लिए पैराशूट किया ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये डेमोक्रेट्स का चहेता, हिलरी क्लिंटन के कैंपेन के लिए $6 मिलियन दिए थे. ग्रामीण बैंक चलाता है, ग्रामीणों से पैसे खा के ये $6 मिलियन दे के आया फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंपेन ऑफ हिलरी क्लिंटन अगेंस्ट हुम, डोनाल्ड ट्रंप. राइट. बट अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, but we still find the same deep state working at work, you see, which is not letting go of Pakistan. And they have now adopted this one to destabilize India, create a cookie land in the northeast, a new state, Christian state, right? Then it helped the overthrow of Hasina Wajid. हमने $1 billion दिए थे United States of America को for the GE-404 engines for the Tejas aircraft. हमको कोई 200 तेजस एयरक्राफ्ट चाहिए थे और अर्जेंटली, बिकॉज हमारे MiG-21 पुराने हो रहे हैं, जैगुआर पुराने हो गए हैं, मिराजेस पुराने हो गए हैं, इनको निकालना पड़ेगा. तो हम 200 एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे अमेरिकन इंजन लगा के. हमारा $1 बिलियन हजम कर लिए, डिकार नहीं लिया और देने से मना कर दिया. आ रहा है हो रहा है 1.5 साल 2 साल हो गए, एक इंजन नहीं दिया, एक नहीं दिया. दिस इज अ स्टैब इन द बैक साहब. अगर ऐसे दोस्त होंगे आप, देन यू वांट अस टू बाई द F-35, $100 मिलियन का एक जहाज, और जिसके एक्सपेंसिव सबसे मेंटेनेंस. और क्या भरोसा है आपका कि साहब आप उसका कोई भी स्पेयर पार्ट देना बंद कर देंगे, आप किल स्विच लगा देंगे, जैसे कि जो अभी तिरुवनंतपुरम में हुआ है, खलास कर देंगे जहाज को. हम एक तो $1 बिलियन दें आपको, 50-60 बिलियन और आप उसको ऐसे खलास. तो आई मीन देन हमको भी थोड़ी तो अकल लगानी पड़ेगी ना साहब. तो देन एक तो है कि साहब हमने तो पूरी कोशिश की है टू बी फ्रेंड्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अगर आपको चीन से नहीं लड़ना, वो तो बहाना बना रहे हैं आप, और लड़ना आपको रूस से है, तो फिर प्रॉब्लम है. बिकॉज रशिया एंड इंडिया आर नेचुरल ऑलमोस्ट allies, very trusted, reliable friend. 70% हमारे भी हथियार रूस के, और अभी तो हमको और चाहिए, because they have proved to be very good, right? So I think इसका solution बड़ी simple है कि make up your mind कि we will follow our national interests. ठीक है साहब? And if our national interests dictate that we break up Pakistan, we will do our damnedest. बचा सकते हो तो बचा लो. तो क्या कर सकते हैं वो बचाने के लिए? कौन नहीं चाहेगा ये, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली पाकिस्तान, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो? अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है. इट यूज पाकिस्तान इन द अफगान वॉर अगेंस्ट द सोवियट्स. 80,000 इंटरनेशनल मुजाहिदीन पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे, वहाँ भेजे गए, लाखों इनके अपने भेजे गए थे. ठीक है साहब? तो इट वॉज यूज्ड. फिर जब अफगान वॉर वो 9/11 के बाद हुई, तो सारे लॉजिस्टिकल लाइन्स ऑफ सप्लाई फॉर अमेरिकन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान वर वाया कराची, वर वाया दीज पाकिस्तानी रोड्स एंड हाईवेज, राइट? सो दे नीडेड पाकिस्तान. दे हैव ऑलवेज यूज्ड पाकिस्तान, यूज्ड इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का. यूज वैल्यू है पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी. उसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया है. जैसे यूक्रेन ने अपनी ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाया कि साहब मैं रशिया के साथ हूँ, मैं रशिया की नाक में दम कर दूंगा, हथियार देते रहो, मैं लड़ने को तैयार हूँ. और वो वानर सेना के चीफ हैं ज़ेलेंस्की, यू नो, लाइक नीरो,
वाह अग्निदेव वाह, चारों तरफ आग जल रही है, अपने लोग मराए जा रहे हो, जस्ट टू प्लीज द अमेरिकन एंड बी ऑन दी वेस्टर्न टीवी कैमरास। मतलब ये पाकिस्तान का हाल है। 71 में क्या हुआ था? अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन पाकिस्तान के साथ था, रूस ने हथियार दिए, भारत ने हिम्मत करी और तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, विद अमेरिका फुल बैकिंग एंड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। So I don't think America will come this time to fight for Pakistan. It will not. But General Bakshi, the point from where we started, आपने कहा पाकिस्तान के 4 नहीं 5 टुकड़े कर देने चाहिए, जिसमें से बलूचिस्तान एक, खैबर पख्तूनख्वा और वो जो भी आपने गिनवाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? हाउ विल दैट इम्पैक्ट अस इन अ पॉजिटिव वे? अगर वहाँ पर 5 लोग होंगे, 5 अलग अलग एंटिटीज़ जो अपने अपने हिसाब से सॉवरेनली गवर्न करेंगी उस एरिया को, तो एग्जैक्टली क्या होगा? विल इट नॉट क्रिएट ए रेफ्यूजी क्राइसिस? Who is to say that those 5 states will survive? Who is to say that they will not become proxies to terrorism? Who is to say that the chessboard will not become even more complicated? Let the chessboard become complicated because the simple point is, भारत में कुछ लोग हैं जिनका मानना है a strong Pakistan is in India's interest. My foot, what has a strong Pakistan given you? Headaches. It has become a nuclear power. ठीक है? You think those nukes will be allowed to be spread between 5 states? What happened to the nukes of Ukraine? When the Soviet Union broke up, Ukraine was forced to give up its nukes to Russia. So उनको defang हो जाएंगे। छोटी छोटी फौज की कितनी ताकत होगी to do you harm? Your ability to harm those small micro states, will be even more than what you can do against Bangladesh. ठीक है? So these will be ineffectual. ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे। इनको आपस में लड़ाना कोई मुश्किल है? You see, अभी भी लड़ रहे हैं, तभी तो split हो रहा है। I understand definitely the logic behind that. The logic is that a strong Pakistan is a danger, is a damned nuisance. It is a drain on your resources because you have to then equally be strong. हम उनको मैच करना भी बंद कर दिया था बीच में तो। थैंक गॉड चाइना ने लात लगाई 2020 में लद्दाख में, तो हम थोड़ा जागे। नहीं तो हमने तो अपने इकोनॉमिक हम कर रहे थे कि भाई डिफेंस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। डिफेंस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सिक्योरिटी। In the future, if something like this happens, what will happen to the nukes? And another leading question to that is, given that both parties have nuclear weapons, nuclear warheads, and they are particularly trained on each other, more or less, क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर वॉर होगा? एंड डू यू थिंक वी हैड कम क्लोज टू इट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? During Operation Sindoor, we had hit Noor Khan, the command and control deeply buried, hardened bunker built by General Electric of the United States at a cost of $500 million. That was the command and control, 40 meter by 40 meter underground command post with entire satellite communication, computers, servers to control all the air battles, and it was linked via satellite communications to the United States satellite system. It had the nuclear command authority located there. वो हमको बाद में पता चला. And the Americans, it now appears, had some nuclear weapons stored up in Chagai, in Kirana and in other places. और हमने उनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन समझ के ठोक दिया। देखिए 7 तारीख को हमने हमला किया था टेररिस्ट कैंप्स पे, हमने ऑफ रैम्प दिया था कि भाई हम यहाँ ख़त्म करने को राज़ी हैं, प्रोवाइडिंग यू बैक डाउन। उसने 400 ड्रोन से हमला कर दिया आपके ऊपर, पहले रेकी करी, अगले दिन वो अपने लॉइटरिंग ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स लेके हमारे एयरफील्ड्स को अटैक करने की कोशिश करी। ये दूसरी बात है कि हमारे एयर डिफेंस ने 90% तुर्किश ड्रोन्स, बरियक्तार्स और ये शिबा ड्रोन्स वगैरह वगैरह ये सब मार गिरा है, ठोक दिए। 90% वो शॉट डाउन बाय द इंडियन एयर डिफेंसेस, so they couldn't do any harm to any of our air base. Then we hit back on the 10th. 10 तारीख को हमने हिट किया, 12 एयर बेसेस में से 11 को ठोक दिया,
जिसमें नूर खान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच जो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उसको उड़ा दिया। फिर हमने उड़ाया जो कि इसका मुरीद में ड्रोन का कमांड पोस्ट था, वो भी अमेरिकन ने इस्टेब्लिश किया था अफगान वॉर में ड्रोन चलाने के लिए, उसको उड़ा दिया। कमांड एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स बाय ड्रोन्स। एंड यू नो समथिंग, इन जो नूर खान में वो 5 फुट की चादर थी, सीमेंट स्टील कॉन्क्रीट की ऑन टॉप। ए डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन कुड नॉट हैव हिट दैट कमांड पोस्ट, राइट। और उस कमांड पोस्ट को हमने कैसे ठोका? हमारे सैटेलाइट्स, नाविक सैटेलाइट्स जो हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ 12 सैटेलाइट्स, इसने पकड़ा कि इसका एयर कंडीशनिंग का वेंट है 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर। बिलीव यू मी, वी फायर्ड अ ब्रह्मोस मिसाइल थ्रू दैट वेंट 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर टारगेट। 1 मीटर रेजोल्यूशन तो छोड़ दें साहब, व्हाट सब मीटर। आर ब्रह्मोस वेंट डाउन दैट शाफ्ट and destroyed that command post. ठीक है। सो उस दिन फिर इन्होंने इन पैनिक सरगोदा की एयरफील्ड 80 फुट का क्रेटर, रहीम यार खान की एयरफील्ड 80 फुट का क्रेटर, सकूर की एयरफील्ड क्रेटर, ठीक है, जहाँ से भी इनके F-16 वगैरह उड़ सकते थे विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स। फिर साहब इन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने शुरू किए, हमारे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने शुरू किए हमारे बरखिलाफ। एक शाहीन फायर किया 700 से 1200 किलोमीटर रेंज का टूवर्ड्स दिल्ली, एंड फिर 2 मारे फतेह 2s, ठीक है। इनके 400 किलो के तो इनके वॉरहेड्स हैं। हाउ आर वी टू मेक आउट कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर है या कन्वेंशनल है? वेयर वॉज द टाइम? उन्होंने कहा कब पता चलेगा? बोलेगा सर जब फटेगा तब पता चलेगा। दैट वुड बी टू लेट, सो इट वॉज शॉट डाउन बाई दी S-400s। वो सिरसा के पास गिरे इसके टुकड़े, डायरेक्ट काइनेटिक शॉट। तो इट लाइक अ ब्लडी मीटियर, आकाश में मीटर की जैसी उल्काओं का वो होती है ना छटा, वो सब दिखी थी सिरसा के ऊपर, और वी शॉट इट डाउन। बट देन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली वरिड कि साहब ये तो कहीं न्यूक्लियर ना कर दें। तो हमने क्या किया साहब कि चगाई हिल्स और किराना हिल्स, सरगोदा के पास चगाई हिल्स, जकोबाबाद के पास, वहाँ इनकी टनल्स हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज, न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज साइट। इनके मिसाइल अलग होते हैं, वॉरहेड अलग रखते हैं, एंड दे आर मेटेड ओनली वंस द वर्ड गो इज गिवन। तो हमको लगा कुछ की हरकत कर रहे हैं शायद निकालने की वहाँ से, तो हमने सीधे हमारे Su-30s विद ब्रह्मोस, वो हवा में ऑलरेडी पेट्रोल कर रहे थे, उन्होंने सीधा ठोका एंट्रेंस ऑफ दीज टनल्स, एग्जिट ऑफ दीज टनल्स। मतलब ना अंदर से कोई जा सकता है ना निकाल सकता है। एंड उस दिन जैसे ही हमारे हिट हुए 4.1 ऑन द रिश्टर स्केल एंड 5.7 ऑन द रिश्टर स्केल, 2 अर्थक्वेक seismic events were recorded in these areas। इसका मतलब कोई अंडरग्राउंड फटे हैं इनके बॉम्ब, जो टनल में डेटोनेशन हुई है। इट मे नॉट हैव बीन न्यूक्लियर, बट इट कुड बी व्हाट इज कॉल्ड रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ। और इतना जबरदस्त था इन दैट क्लोज स्पेस कि इट क्रिएटेड seismic shock waves, right, which were recorded in India, in US and the world। yes, ठीक है। Then next morning the Beechcraft 350 एयरक्राफ्ट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट, जो कि रेडियो एक्टिविटी लेवल्स मेजर करता है। इफ देयर इज अ न्यूक्लियर मेल्टडाउन, न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ जैसे चेरनोबिल, right, या फुकुशिमा, यू नो, ये सब होता है। सो देन दिस एयरक्राफ्ट गोज टू मॉनिटर रेडियो एक्टिविटी। yes, I know, it was seen at Noor Khan, दिस एयरक्राफ्ट वाज सीन फ्लाइंग ओवर चगाई हिल्स, Kirana Hills, and landed at Noor Khan, right? And then another interesting feature, Egyptian IL-76 aircraft full of boron 10 isotope, जो कि नाइल वैली में पाई जाती है, and which is used to tamp down neutrons, रेडिएशन को दबाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो इजिप्ट से एयरक्राफ्ट आई वाया चाइना होते हुए, एंड इट वाज सीन फ्लाइंग ओवर दीज एरिया, यू नो, गोइंग zigzag पैटर्न। कुछ न्यूक्लियर हुआ है, तो मतलब कुछ न्यूक्लियर तो हुआ है। और मतलब तभी आप फिर लिंक करें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा अपनी स्पीच में कि अब न्यूक्लियर धमकी अमकी नहीं चलेगी।
लुक, आपकी न्यूक्लियर धमकी के केवल 2 वेक्टर्स हैं ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन. एक है मिसाइल्स. 3 मिसाइल फायर किए, 3 मिसाइल शूट डाउन हो गए. मतलब आर मिसाइल डिफेंस इज सो स्ट्रांग that we can almost ensure that not a single missile will get through because of the S-400s and the Barak missiles, right? Next is you can send them via aircraft. हमने एयरक्राफ्ट का कमांड एंड कंट्रोल ही हिट कर दिया. मतलब उसके बगैर को इट इज़ विदाउट ऑर्डर्स, विदाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, विदाउट इंटेलिजेंस पिक्चर. कहाँ से उड़ेगा, कहाँ पे हिट करेगा, उड़ना बंद कर दिया. ठीक है साहब. उसके अलावा जिस एयरफील्ड से सरगोदा से उड़ सकता था, उस सरगोदा में ऐसे क्रॉस की तरह उनकी 2 रनवेज है. जहाँ क्रॉस का एक्स होता है वहाँ पे ठोका, 80 फीट का क्रेटर बना दिया. तो कहाँ उड़ोगे खड्डे में से. रहीम यार खान से आ सकते थे, वो उड़ा दिया. सुकूर को उड़ा दिया. 7 रडार थे, वो उड़ा दिए. ठीक है. कमांड एंड कंट्रोल के मेन बंकर वो उड़ा दिया. 2 टर्किश ट्रेलर माउंटेड कंट्रोल सिस्टम्स थे, वो उड़ा दिए. मतलब न्यूटर कर दिया. अब आप चाहो भी तो नहीं फायर कर सकते. देते रहो गीदड़ भभकी, देते रहो गीदड़ भभकी. तुम न्यूक्लियर मिसाइल एक नहीं चला सकते हमारे खिलाफ, ना एयरक्राफ्ट से डिलीवर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एयर डिफेंसेस एंड आवर ऑफेंसिव एक्शन. General Bakshi, were you happy when sorry to interrupt. Yeah. Are you happy जब Operation Sindoor was abruptly shut down, given that these were the damages we had done, ये सब accumulate कर लिए थे हमने victories. Are you happy when it was shut down? Or do you think we could have gone further? Should we have gone further? Had we actually neutered them nuclear wise? Yes. Was I happy? Yes. क्या मैं खुश था? नहीं. मैंने टेलीविजन पे कहा था ये दिल मांगे मोर. और भाई तुमने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है. यू हैव ड्रिवन हिम आउट ऑफ हिज ओन स्काईज. यू कैन नाउ हिट एट विल. तो 2-3 दिन और मार लेते तो कौन सा आफत आ जाती, कौन सा आसमान ढह जाता, कौन सा क्या होता. मैं समझता हूँ कि हमने थोड़ा प्रीमेच्योरली किया. बट लगता है कि बहुत सारा अमेरिकन प्रेशर था. क्योंकि उनके जब खुद के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हिट हो रहे थे. आप जानते हैं उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स ने, अमेरिकन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था नूर खान एयरबेस. किसी पाकिस्तानी को आने नहीं दिया. वहाँ से अपने ट्रांसपोर्ट जहाज ले जाके कुछ वापस ले जा रहे थे. व्हाट वाज इट? व्हाट वाज न्यूक्लियर वॉरहेड्स? अब तो यहाँ पे अटकलें लग रही कि साहब, डिड पाकिस्तान हैव अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ इट्स ओन, या दीज अमेरिकन वॉरहेड्स वर मास्करेडिंग एज द इस्लामिक बॉम्ब. दुनिया भर का बेवकूफ़ बना रहे थे. लेकिन ऑन मोर इन्वेस्टिगेशन इट लुक्स कि अपना बॉम्ब तो चीन की मदद से बनाया हुआ है उन्होंने. लेकिन 2006-2007 के बाद से अमेरिकन ने उसके ऊपर पंजा डाल लिया था. दे न्यू वेयर दे वर हिटन. उन्होंने PAL लॉक्स लगाए थे कि परमिसिव एक्शन लिंक्स, कि भैया ये ना हो कि इस बहाने कि टेररिस्ट ना इनको अगवा कर दें, उनको उनके पास ना चढ़ जाए. तो फिर तो वो कहीं भी उड़ा सकते हैं दुनिया में. न्यूयॉर्क में उड़ा सकते हैं, कहीं भी उड़ा सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने दे हैड टेकन टोटल कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल. So General Bakshi, we had started talking about the whole thing from the point of view of the end state. Yeah. End state क्या होगा, 5 टुकड़े होंगे. Is there a possibility in the multiverse of possibilities where the end state is nuclear between India and Pakistan? और अगर nuclear है, कैसा होगा वो? How will it play out? Will it be worth it? It will never be worth it. It is insanity to fight a nuclear war. We are very clear that nuclear weapons are a weapon, political weapon, to ensure that they are not used. Mutual deterrence cancels it out. You see, the simple fact is, if there is a nuclear war, हम तो बच जाएंगे, because हमारा size 5 times पाकिस्तान का है. तो हमारा आर्सेनल तकरीबन बराबर है. उनके पास 170 वॉरहेड्स, लेकिन छोटे छोटे वॉरहेड्स, 10 किलोटन एंड बिलो. सब किलोटन बहुत सारे हैं. ठीक है. हमारा जो वॉरहेड्स हैं 180 हैं, एंड दे आर मच हैवियर. उनका साइज 1/5 है. वी फायर ऑल आवर वॉरहेड्स एंड यू फायर ऑल योर वॉरहेड्स. 3/4 ऑफ इंडिया विल रिमेन अनटच्ड. ठीक है. बट पाकिस्तान विल बी सीज टू एग्जिस्ट. क्या वो रिस्क करेंगे? मुझे कहते हैं लोग कि नहीं साहब, ये पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कहना. बकवास. When push comes to shove, they are, as the Pakistani generals are value their hide, as much as anybody else.
एंड जो लोग बड़े ऐश महल में रहते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करते. वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करता है फटीचर, मरा हुआ भूखा नंगा टेररिस्ट फ्रॉम सम स्लम इन कराची और लाहौर, जिसे 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही. उसका क्या जाता है? लाइफ इज हेल एज इट इज. तो इफ इट बिकम्स उसके हाथ पड़े देन यू हैव अ प्रॉब्लम. But in the hands of a rational state actors, it will not be used, number one. And number two, जो मैं आपको बता रहा हूँ, Operation Sindoor has proved that we can prevent Pakistan from using nuclear weapons, even if he has it. It was as clear as daylight. No wonder आपके प्राइम मिनिस्टर ने शरे-आम कहा है कि न्यूक्लियर धमकी धमकी भभकी जो है अब हमको बिल्कुल डिटर नहीं करेगी. वो कुछ बुनियाद पे कह रहे हैं ना कि आपकी जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल है हमने उसको न्यूटर कर दिया, सिंदूर में न्यूटर कर दिया. Given the fact that China बोलता है, I was seeing some interview, one of their spokesperson was saying we are standing with Pakistan no matter what. उनके पास तो सर बहुत हैं. They stand unneutered, very powerful nation, China. मैंने बिल्कुल बिल्कुल. Are they willing to use nukes for Pakistan? Did they intervene militarily in सिंदूर? हथियार दिए थे, पहले के दिए हुए थे. हाँ, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सैटेलाइट इमेजरी दे दी, बस. पोस्चर भी नहीं किया अपने बॉर्डर पे, क्योंकि हमने क्लियर कह दिया था तुम करो भैया, टिट फॉर टैट करेंगे. अभी तो हम लड़ रहे हैं ना और तुम तमाशा देख रहे हो. अरे कल तुम ताइवान में लड़ रहे होगे, हम तमाशा देख रहे होंगे, फिर तुमको टिट फॉर टैट देंगे. अगर तुम हमको उंगल देते सिंदूर के टाइम, we would have given it back at the time of when China was involved in Taiwan or South China Sea. So they are also very clear. वो बड़े अकलमंद लोग हैं. The Chinese are a far more balanced and stable enemy than Pakistan. पाकिस्तान चुलबुली से बाज नहीं आता, ठीक है, but the Chinese are calm, very patient people to Doesn't that extent. that make them more dangerous? They're very strategic, obviously. They are वो- strategic, obviously. They खुला- think long term. In the long term. They think in terms of they have a lot to lose. देखो भाई, simple fact is India also has nuclear weapons. If China has, so have we. We have Agni 5s, which can blast Beijing, which can blast Shanghai. Are you prepared to lose Beijing and Shanghai? For the sake of what? Pakistan? I don't think so. No country is foolish enough to invite a nuclear bomb on Beijing or Shanghai or Nanjing or wherever, Shandong, because you want to support Pakistan. Iron Brother Sadar is good statement. Yeah. Deeper than the, higher than the mountain, deeper than the seas, Iron Brother, this, that, ye, wo. It's all good statements. What did they do? They did exactly like what we had estimated. They would talk, they would give moral support, they have already given the material, they would give some more, they would give advice. As it is, their officers are, Pakistani officers are bedded with the Chinese Western Theatre Command, embedded officers. So advice though, satellite support though, intelligence support though, that's all. That's all. We can handle that. Right. We handled it. But one-on-one with China, क्या लगता है आपको क्या होगा? वन ऑन वन विद चाइना भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 1962 और 2025 में लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है. It is not the same India which you can kick and get away with, right? This is an India which can hit back. And you should be prepared then to lose parts of Tibet. If you mess around with India, you should be prepared to lose parts of Tibet. We can also play the Tibet card. We can play the Taiwan card. We can help Taiwan. We can provide BrahMos cruise missiles to them. You finger us, we will finger you. We will play tit for tat. The only language the Chinese understand is exact tit for tat language. You karo, I'll pay you back in the same coin. Okay? And I think this message is getting through to the Chinese. Because the Chinese have, in their strategic thinking, they have a concept called one strategic direction. At one time, we fight only in one strategic direction. We do not fight two-front wars. Civilizationally, we think that is stupidity. And they are right. No country wants to fight a two-front war. It will focus on one front
deal with that and then turn to the other. The problem is the front that they want to focus on is Taiwan, where Japan, where America can come in. That is the major threat. उससे संभलो तो फिर इंडिया की सोचो. You know, to try and finger India also in the same breath. That is why they are trying to get a thaw with you. They are openly trying for a thaw, and so are we. हमको भी अकल है. Why should we fight with China if this is what America is going to do to us? Instead of helping us fight, they want to sabotage our air force by not giving engines which we have paid. हम कोई भीख नहीं मांग रहे. We are paid for them. We have paid for them, man. So ये तो आप this is a stab in the back. Yeah. So with you as a friend who wants to fight China, why should we fight China? We'll fight China if we have to. But तुम्हारे instigation पे तो नहीं लड़ेंगे. Because you have proved how reliable you can be or unreliable. You will treat us like Ukraine. Yeah. You will be very happy to fight China to the last Indian. Yeah. Last Indian standing. So I don't think we should get used. And Indians are smart enough, and we have said we value our strategic autonomy. Autonomy. Coming to Indians being smart enough. And you also alluded to, आपने mention किया बांग्लादेश, वो फ्रंट उस पर ध्यान किसी का नहीं था, बट वहाँ पर कुछ हो रहा है बहुत देर से. एंड समहाउ समवेयर ऑपरेशन सिंदूर, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड शेख हसीना आर ऑल कनेक्टेड. Very connected. What is the connection? The connection is, like I said, Sheikh Hasina was overthrown by the CIA in tandem with the ISI and the Jamaat-e-Islami. That is the connection. You see, the Americans had told Hasina Wajed, you play ball and we'll see that you stay in power. She said, what do you mean by playing ball? Hand over St. Martin's Island, number one, as a base against India. Help us in creating a cookie land. Against India. Against India. This is This is what the Hasina Wajed herself has said so. This is what Americans wanted. This is what the Americans wanted under Joe Biden. Whether they are continuing with the same policy or not. And what it appears is that there is a deep state. Regardless of what Donald Trump says, he sounded very pro-Indian. But when it comes, push comes to shove, even he is going on with the same policy of helping Pakistan. They have given $400 million to Pakistan to upgrade their F-16s. That's not a friendly act. It's not over. We agreed before we started talking that this whole thing, Operation Sindoor, is not yet over. Absolutely. Far from not over. yet over. Far from over. And I wonder if you heard the reports that the Ulfa Independent camp in Myanmar, Seging province, has been hit by 100 drones just about 2 days back. The number 2, the self-styled Lieutenant General of the Ulfa, a guy called Nayan Ahom, he was killed. 2 other top commanders were killed. The camp was hit twice. One at about 2 in the morning, and then they were cremating the dead bodies of these commanders. It was hit a second time, and about 20 to 30 insurgents have been killed. It is part of the same calculus that you are talking of. The China, Pakistan, Bangladesh axis with benign support from the United States operating against India, you see, and India is hit back. This time, we have not retaliated. We have preempted. Of course, we have said, no, we haven't done it. The army has said, हमने नहीं मारा. Assam Rifles said, हमने कुछ नहीं किया. But 100 drones don't Yes, they don't appear out of nowhere. appear out of the blue. Yeah. You know, and they can't be, a non-state actor can't fly 100 drones. Correct. You know, 1 or 2 drones, fine. Correct. But 100 drones, and big ones at that, which have devastated and then attack on the insurgent camps, you see, of the NSCN, Khaplang, PLA, Ulfa, combined camps, which were being given instructions, and Paresh Barua, the Ulfa commander who had escaped from Bangladesh, he had gone to Yunnan. He is now back in Bangladesh. So we got news that he was back, then we got news that 3 Pakistani brigadiers under the guise of Army Medical Corps officers had come to Bangladesh. And we knew what was coming next. So before you do it to us, we did it to them.
That is what it appears to be. What was coming, General Bakshi? What was coming means Pakistan knows that if it tries on the western border terrorist attacks, we have made it clear any act of terror will be deemed an act of war. So now he is trying to come through the eastern flank, which is softer. And we should be even more violent in the eastern front. And if Bangladesh harbors such groups or such masterminds of ISI, then Bangladesh should be prepared to pay a price, and we should extract a heavy price. We can cut off the Rangpur salient, finish the threat once and for all, make the chicken's neck an elephant's neck. Right. In that corridor. There is another corridor down near the Chittagong hill tracts, where from Tripura we can cut straight to the sea, Yes. and cut off the whole Chittagong hill tracts from Myanmar. So if Myanmar thinks only it can finger India, well, India can play the game. Do you think something on those lines, conflict, is brewing, will happen? Or has it been completely preempted on the Eastern Front? No, this was a very small hit. We need much bigger hits Bigger hits. to send the message home. We need to create, we need to raise costs and consequences. And this is a minor hit. This is a hit on the insurgent camp. The message is to the insurgents, don't mess with us. Wherever you are, we'll come and get you. There is nowhere where you are safe. Neither in Bangladesh, nor in Myanmar, nor in Pakistan, for that matter. Zooming out, General Bakshi, with your permission, and going to the larger perspective of things, zooming out from geopolitics. One, the state of warfare. You have fought battles. You have killed, you have come close to getting killed. You have lost people. Battles are fought in a different manner, as we have seen now. We saw it in we saw it in Israel. We saw this, the entire exchange is all aerial. It is machine versus machine. It is AI versus AI. Do you think the man behind it is taking a back seat? What about the courage, the bravado? And when the blood boils, all one can do is push buttons. Is that how you see warfare evolving? Not necessarily. There is Colonel John Steiner, I'm forgetting his head name. He is an American expert who's written extensively on Operation Sindoor, studied it, and he came here. And he said the biggest mistake you would make, any army would make, is to think that the infantry, the days are over. Tanks, the days are over. It's all going to be drone warfare and push-button warfare and non-contact warfare and BVR, beyond visual range warfare. I'm sorry. If you want lasting results, it is ultimately the infantry which has to capture and hold ground. And you think Baluchistan will just come by drone warfare? I'm sorry, it won't. Some boots on the ground will have to be put. You think POK will come? We are making very strident claims that we will capture, take back POK. You think it can be taken by drones? Think again. You need the infantry, you need the tanks ultimately to go and capture and hold ground. If you want lasting results, then you need this. If you want temporary neutralization, कि भाई हिला दिया, 6 महीने तक होश हवास उड़ जाएंगे, वो 6 महीने के बाद फिर आएगा. सर POK पे मैं आता हूँ. मुझे पता है कि मैं वापस आ रहा हूँ घूम फिर के. आई एम जूमिंग बैक इन. बट POK, डू यू थिंक POK कभी वापस आएगा, इंडिया का पार्ट बनेगा, कि हमेशा ऐसे कन्फ्लिक्टेड जोन में रहेगा? I would turn the question around a bit and मैं आपको कहूँगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ शिया हैं हु हेट द सुन्नीज और उनके खूब मार काट ब्लड लेटिंग हुई है. वो तो हमको लेना चाहिए फॉर द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्कार्दू टू प्रिवेंट अ चाइना पाकिस्तान लिंकअप. नाउ कमिंग टू दिस मुजफ्फराबाद पार्ट, यहाँ इतनी पंजाबी मुस्लिम पॉपुलेशन आ गई है कि इसको एब्जॉर्ब करना तो विल बी अ पेन इन इंडिया. मैंने हमेशा गदर करते रहेंगे. हालांकि अब वहाँ के लोग भी इतने परेशान हो गए हैं पाकिस्तान से कि दे वांट टू मर्ज विद इंडिया. कह रहे साहब इंडिया से मर्ज करना है, लेकिन डू वी वांट देम? गंद है बिल्कुल ट्रबल करता रहेगा. शिया लोग दे आर एमिनेबल,
The Shias of Kargil are so loyal, Shias of Ladakh are so loyal, you see. So those Shias we can integrate. But we might kick them out from there and then leave it, something like that. But a permanent occupation would require a lot of boots on the ground. Why do you want to waste that energy of taking this part of POK? I'm not very sure if we really need it. We can go there, destroy all the camps and put it on notice ki you make a camp, we'll come and destroy it. Or our drones will come and destroy it. Zooming back again, foreign policy, war policy, anti-terrorism policy of India. क्या ये अब नए रूप में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी समझाया, बताया सब कुछ डिटेल में, एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर, पानी और खून साथ नहीं बह सकता, ऑल ऑफ दैट, इज इट अग्रेसिव इनफ और नॉट येट अग्रेसिव इनफ? No, I think it is what was needed. An act of terror will be deemed an act of war. The nuclear threshold will not withhold us from taking back action. We will not distinguish between terrorists and their handlers. This is a very major new thing that thank God has come. Otherwise, we were parroting the Pakistani narrative. What is the Pakistani narrative? These are non-state actors. हमारा कोई लेना देना नहीं साहब. हम तो गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं. ठीक है साहब, हमने तो कोई टेरर किया ही नहीं साहब. जबकि असलियत क्या है? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI इनको रिक्रूट करती है, हथियार देती है, ट्रेन करती है, इन्फिल्ट्रेट कराती है, और जो लास्ट मिनट ऑपरेशंस हैं उनको सैटेलाइट फोन्स पे कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स. हु इज़ द रियल टेररिस्ट? ये तो एक्सपेंडेबल हैं, ये तो फटीचर लोग हैं जो कि स्लम से उठाते हैं और 12 बच्चे एक फैमिली के, वो तो खिला नहीं पाते, तो वो 4-5 बच्चे तो थमा देते हैं मदरसे को कि कम से कम 2 रोज़ की रोटी तो मिल जाएगी साहब, और वहाँ पे उनको जिहाद वॉरियर बनाया जाता है, मर जाएं तो मर जाएं. पाकिस्तान की फ़ौज का क्या जाता है? व्हाट इज़ देयर? ये लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर है. दे कैन कंटिन्यू इट फॉर एवर, ठीक है, डिस्पाइट देयर इकोनॉमी, ठीक है. बट व्हेन दिस कॉस्ट्स आर रेज्ड, जब पाकिस्तान का नूर खान बेस उड़ जाए तो फिर तो दर्द होगी ना साहब, ठीक है. सो दे हैव टू मेक अप देयर माइंड नाउ on that particular aspect. Yeah. Then Bakshi, what do you think about Field Marshal Asim Munir? And you have very strong opinions, I know you have, but he gets to have an audience with President Trump. What is going on? I know you explained it, but particularly about the man, I'm curious about it. He is a very clever cookie. Huh. Very ambitious. He is a mad mullah. Achha. He is more of a mullah Munir Khan. He can reel off couplets of the Quran. Huh. You know, like most Pakistani generals are pretty secular. They love their whiskey. I mean, so does he, by the way. अच्छा. इसको भी whiskey बहुत पसंद है. याया खान को बड़ी पसंद थी. वो तो धुत था. You know, when you talking of the 71 war on radio, he was sozzled. Oh. You know. So the Pakistani generals have a weakness for Scotch whiskey, especially if it is free. Oh. Which I'm sure they get plenty of. Right? Oh, they get plenty. There's no end of the whiskey crates. So this man, you see, I think Operation Sindoor was partly due to his ambition. Did he want it? Did he want this to happen? Of course he wanted it to happen because he found that the internal, fractures in Pakistan were reaching a proportion which were dangerous, right? And he wanted to divert attention to a very traditional Indian enemy, pointed towards India, and divert that public angst about Baluchistan and about Tehreek-e-Taliban Pakistan and Sindhu Desh, etc., all towards a familiar external enemy, India. He was sure that if even there is a minor war, the Pakistani population would rally around the flag. And they have. And they have. So temporarily he is gotten there, and this helps him to entrench his rule. You see, he was to retire in November this year. Very smartly, when he got rid of Imran Khan, he had twisted the tail of Shehbaz and gotten all the 3 service chiefs, all 3 service chiefs, 2 years extension plus. कि भाई ज़रूरी है and all that. तो कि भाई बाकी भी खुश रहे, नहीं तो कह रहे थे कि भाई तू ही है ज़रूरी. So Army Navy Air Chief got 2 years extension. Therefore his tenure got pushed to 27. But this man decided कि यार being chief is so nice. The power, the pelf, the butlers, the waiters, the free whiskey, keep it coming.
You know, so he decided to be a field marshal, and a field marshal never retires. Oh, is that so? No, oh yes, as per the British tradition which India and Pakistan have inherited, a field marshal never retires. You see, he is for life, field marshal for life. So he said, if I start a small, tidy little war which gets wrapped up without much damage to Pakistan, then I'll twist their tails and make me field marshal, and their pop will obey. And they have obeyed. शहबाज शरीफ साहब ने इनको फील्ड मार्शल बना दिया. सही मानों में तो ये फेल्ड मार्शल है. इज अ फेल्ड मार्शल. तो तुमने किया क्या लड़ाई में? लड़ाई तो लड़ी आपकी एयरफोर्स ने. पिट गए वो दूसरी बात है. लड़ाई लड़ी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने. कायदे से अगर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनना चाहिए था तो वो बाबर सिद्धू साहब को बनना चाहिए था. एयर मार्शल बाबर सिद्धू. कम से कम वो लड़ा तो. वो पिट गया दूसरी बात है, बट कम से कम ही फॉट. तुमने क्या किया? आप तो जाके अपने बंकर में छुप गए थे. इन्होंने अपनी फैमिली को अमेरिका भगा दिया था लड़ाई शुरू होने के पहले. ये तो हाल है. ठीक है. और अपने आप को ये फील्ड मार्शल क्या फील्ड मार्शल बना लिया फॉर अ 96 आवर वॉर. You know, Seems to have worked nicely for him. it's worked very nicely for him. But he has his eyes set even higher. Oh. He, like Field Marshal Ayub Khan, who became president of life, president for life. ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान की फौज ने फिर उनको खदेड़ा 1965 के बाद और हटा दिया. ठीक है. This man wants to be the president of Pakistan for life. He said, if Ziaul Haq could rule for 11 years, I can't you know, if Parvez Musharraf could become president and rule for 10.5 years, why can't I? उतना तो टाइम चाहिए. I am the man of destiny. Pakistan needs me and I need to be the president of Pakistan. So he is trying to get Zardari to get out of office, खाली करे presidential palace so that he can go right in. अगर उसकी प्राइस देनी पड़े कि बिलावल भुट्टो को पीएम बना देंगे तेरे बेटे को, so maybe he'll settle for that. वो तो कठपुतली है. He's very amenable, it seems. Amenable to Which is whatever being- the which is- Pakistani are. which अरे is being, उसके दादा को पाकिस्तान की फौज ने मारा, उसकी माँ को पाकिस्तान की फौज ने मारा, and that man is shameless enough to be a toady of the Pakistan army. So he is a suitable choice. Yeah. Suitable boy. Suitable boy indeed. Do you remember that novel? A suitable boy. Yes. A suitable boy. Yes, Vikram Seth. Yeah. So suitable boy is getting ready, but his papa doesn't want to leave the presidential palace. So that is a bit of a problem, and we'll see how Asim Munir manages that. He will. वो पाकिस्तान के civilians are puppets. सर बट जो हिस्ट्री रही है इनके मिलिट्री लीडर्स जब इनके पॉलिटिकल लीडर्स बन जाते हैं, इट हैज ऑलवेज लेड टू ब्लडशेड. बाय डिफॉल्ट इट विल गो इन दैट डायरेक्शन. Even if he remains a military leader, it will result in bloodshed. I don't think anybody can stop that. Really? The forces of history are proceeding that way. You Where know, do you see the forces of history going? the forces of history, firstly, we've stopped the water, Indus Water Treaty. So after some time, he will be desperate to do something to break the log jam. And that will be a terrorist incident again. And that will mean the next round of Sindoor, Right. which has not been called off. Operation Sindoor is live, it seems. It's very live. I can't say I look forward to it, but I hope it goes in our favor. And I hope it achieves all the aims and objectives that Right. we have set for ourselves. Right. And it is fought for a long-term objective now and not for point scoring. You know, or saying that, okay, Yeah. we, you know, तुमने माँ की गाली दी, हमने बहन की दे दी. You know, yeah. It has to go beyond Go that. beyond it. And Achieve sort of something have long-term. some lasting results Have some last. and consequences. Right.